18-year-old Mangli Munda has just got married, but she's already worried her new husband might stray, and with good reason. He's a dog. नहीं, मैं शादी से खुश नहीं हूँ. Mangli's parents ordered the rushed wedding on the advice of holy men who said their daughter was cursed. मैंने कुत्ते से शादी इसलिए की क्योंकि गांव वाले ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मुझ में जो दोस्त है वो कुत्ते से शादी करने से वो उस पर चला जाएगा और फिर इसके बाद जिससे मेरी शादी होगी उसकी उम्र भी लंबी होगी. ऐसा मेरे गांव के लोग कहते हैं कि बाकी भी मेरी तरह लड़कियां हैं जिन्होंने इस रिवाज को माना है, उनके ऊपर से ये दोष हट चुका है और वो अभी खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं. The teenager was apprehensive at first, but eventually decided to follow her parents' wishes by marrying a local stray named Sharu. हाँ, पुत्र से शादी करेंगे. बहुत हुई कम से कम 4-5 को शादी देखे हुए. शादी विवाह जो हम कर रहे हैं अभी किए, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी. No expense was spared on the big day, and Sharu even arrived in his own chauffeur-driven car. The whole village then watched as a traditional Hindu ceremony was performed before toasting their happiness with cups of homemade liquor. हाँ, खर्च तो होते है, लेकिन क्या करबे, दोस्त के भगाए तो करे पड़त है. गांव कर भलाई कर लिए नहीं, पूरा रीति रिवाज कर साथ करत है, पूरा नियम धर्म सब. With the wedding hailed a success, guests left optimistic that the curse had finally been lifted. And with the wedding not legally binding, Mangli is now free to find Mr. Right. जी हाँ, मैं करूँगी शादी. हर लड़की का तो यही ख्वाब होता है कि वो अपने सपनों के राजकुमार से शादी करे, और मैं उसके लिए इंतज़ार भी कर रही हूँ. As for Sharu, he'll still play a big part in Mangli's future as her new family pet.